Hello and welcome to WeLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 17, Economic and Social Appraisal of Financial Administration. Topics to be covered are Introduction, Role of Cost Benefit Analysis in Project Development, Evaluation and Implementation, Financial Analysis and Economic Analysis Distinction, Step in preparing a full economic evaluation, social cost benefit analysis. At the very beginning, the first question that basically arises in our mind, what's the need of this particular unit? सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में अराइज होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, हम इसको यूज किस लिए करते हैं. सो इंट्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑल्सो कॉल्ड कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस. देखिए, इकोनॉमिक एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि कंपनी में किस टाइप का बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, साथ के साथ उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ उसके साथ वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. सो an economic analysis is also called cost benefit analysis, is an extension of a financial analysis. An economic analysis is employed mainly by the government and international agencies to determine whether or not a particular project or policies will improve a community welfare and should therefore be supported. A cost benefit analysis enables the analyst to determine if the project will make a positive contribution to the welfare of country. It should routinely be undertaken to evaluate measured governmental funded project and policies. The government should also undertake a cost benefit analysis of any private project seeking government subsidies or policy support such as profit traffic protection. While a financial analysis is concerned only with the interest of implementing agency or firms, cost benefit analysis is concerned with welfare of all firms, consume and government in a particular country. An economic analysis is not, however, concerned about the welfare of foreigners. The methodology of cost benefit analysis or CBA was first developed in 1930s in United States when federal government had to decide whether to undertake many large publicly funded irrigation, hydroelectricity and water supply project in a dry central and western state of United States. Similar is written in this particular slide. Now move to our next slide. Next slide contains role of cost benefit analysis in project development, evaluation and implementation. So the technique of financial and cost benefit analysis are employed in 3 of 6 identified ages of project: formulation and evaluation, 2, 3, 6. like प्रोजेक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी कैसी है. देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, इस पर्टिकुलर टाइम की हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है. सेकंड आता है हमारे पास प्री फिजिबिलिटी स्टडी. फिर उसके बाद हम एक स्टेज पे अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं उसके मेजर कंपोनेंट को, उसके बेनिफिट को और उसकी कॉस्टिंग को. फिर हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, क्या वो प्रोजेक्ट बनाना हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है. उस प्रोजेक्ट की जो अप्रूवल होगा वो उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ उसको बनाना पॉसिबल है तभी हम उसको बना पाएंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं बना पाते हैं. नेक्स्ट, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास पोस्ट इवेल्युएशन होता है कि वो इम्प्लीमेंट होने के बाद ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ. सो मूव टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. सो at this stage, the initiating agencies such as government departments or utility defines the initial concept of project and outlines the objective that the government wishes to achieve it. These may include the provision of health,
transport or education services. For example, the first major issue that must be investigated is the existence of market opportunity. In the case of social services, the analyst must determine the anticipated demand for the project output and benefit that the public is expected to derive from these services. Next है हमारे पास प्री feasibility study. So at this stage the analyst contains approximate evaluation of the major component of project cost and benefit, input and output quantities and prices. More precise estimates must be made of demand for the project's output and technical capacity and cost of the plant or technology unused or the project manpower requirements. नेक्स्ट इसकी बात हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या होगी, फिजिबिलिटी स्टडी, देन प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा, देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी. सो फिजिबिलिटी स्टडी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इस स्टेज के अंदर हमारे पास एग्जैक्टली देखा जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को बनाना पॉसिबल है या नहीं है, इसके साथ कौन से रिस्क होंगे. उसके बाद प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जाएगा. सो इन प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग दिस इन्वॉल्व्स undertaking the detailed engineering design work of the project based upon the technology. जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड जो होगी हमारे पास उसकी डिज़ाइनिंग की जाएगी. मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड कंटेन इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा इस स्टेज पे आके हमारे प्रोजेक्ट को. सो एट दिस स्टेज टेंडर्स आर लेट एंड कॉन्ट्रैक्ट असाइंड टू द फैसिलिटेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर हु विल oversee the construction and possibility of operation of the project. Next है हमारे पास ex post evaluation. So the final stage of project is essential yet frequently overlooked in the project appraisal and implementation. This evaluation is designed to determine the actual contribution that the project has made to the national welfare after several years of project operations. Move to our next slide. Next slide contains financial analysis and economic analysis distinction. So, the economic analysis technique outlined here are some of the common point outline किए गए हैं point को. Firstly, a traditional financial analysis examines a project from the narrow perspective of entity undertaking the project. It does not take account of effect on another enterprise or individual. Thus, a proposal put forward by one government agency may inflict cost on another government agencies, on private sector enterprises or an individuals. These external cost and benefit must be taken into the account. Similarly, a strictly financial analysis does not consider the opportunity cost of using resources in case where the actual price laid or by the entity is not a good indicator of real value in terms of alternative uses. Secondly, economic evaluation does not consider directly the payment of interest, rather real resources follows are shown and time performance is taken into the account by use of discount rate. Thirdly, in economic analysis, capital expenditure is recognized as a response cost at the time it is incurred, whereas in financial analysis it may be shown amortized over the life of project for taxation and other purposes. Next step in preparing a full economic evaluation. कौन कौन से स्टेप होंगे? सबसे पहला स्टेप है डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव. हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे. उसके लिए कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन होंगे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, हम वो पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट एंड बेनिफिट को एनालाइज करेंगे. सो पहले स्टेप पे हम लोग मूव करते हैं अगेन, दैट इज अवर डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव. सो द स्टार्टिंग पॉइंट एंड
In many ways, the most crucial aspect for the evaluation of an investment proposal is specification of objective of the proposal and their relationship to the overall objective of the agencies. Second है हमारे पास identification options. It is necessary to identify the widest possible range of options at the earliest stage of planning processes. One alternative that should be considered is the possibility of objective being met by the private sector. In developing various options, the first option to be considered is the base case of do nothing. Move to our next point, identification of cost and benefit, the without principle. So this is the base principle of any type of project evaluation. In practice, it means that an attempt should be made to estimate the state of the world as it will exist with the project in existence. It should be constructed with the state of world that would be existed in the absence of the project. Now move to our next slide. Next slide contains valuation of cost and benefit. हम उन cost और benefit को evaluate करते हैं. So इसमें basically बताया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि मनी टर्म कैसी कैसी हैं, मनी टर्म उसको बेसिकली एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही. मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. Next slide contain opportunity cost principle. So the use of resources in one particular area will preclude their use in many another. Hence the basis for valuing the resources used in opportunity cost of committing resources, that is the value these resources would have in most attractive alternative use. The adoption in this principle reflects the fact that economic evaluation of public sector projects should be conducted from the perspective of society as a whole and not from the point of view of a single agency. Next है हमारे पास willingness to pay principle. So basically two types के हो सकते हैं, benefit for which a price is paid और benefit for which no price is paid. Now move to our next slide. Next slide contain social cost benefit analysis. इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं basically distributed weights क्या होते हैं. So move to this particular slide. जैसे नेम ने सजेस्ट किया वो वैसा ही काम कर रहा है. So one of the commonly used method of undertaking a cost benefit analysis to इंट्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वेट इन द कैश फ्लो. जो हमारे पास कैश फ्लो हो रहा है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो एक सेंट्रलाइज नहीं है, हम उसको पर्सन टू पर्सन या फॉर्म टू फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेटेड इनटू द कैश फ्लो. किस टाइप से होता है? सो इन इकोनॉमिक एनालिसिस प्रोजेक्ट जनरेटेड चेंजेस इन consumption enjoyed by all income group are weighted at utility D is equal to I. Here are some of the formulas, some of the argument कैसे वो काम करेगा. Now move to our next slide. Next slide contains firstly it is difficult to tracing the net income changes. Secondly the problem with the use of distributed weight relates how government or project analysis can objectively determine the appropriate set of weights. Next slide contains question for all of you people. At the very beginning my first question is discuss the differences between financial analysis and economic analysis. Second question is briefly explain the step in preparing a full economic evaluation. So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, free learning.